अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो कुछ दिन पहले 3 दिसंबर को हम लोग गए हुए थे विटकॉन, जो मैं फ़र्स्ट टाइम गई हुई हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम विटकॉन देखा है और ये अबू धाबी में है और हम लोग ने बहुत इंजॉय किया। सो अभी हम लोग जा रहे हैं। सो ये देखिए, ये ज़िगज़ैग इतना रश नहीं था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने ये बनाया हुआ था। खैर बाद में भी रश हुआ होगा क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे, क्योंकि वहाँ पर खालिद अमीरी जो था, आमरी जो था, वो आया हुआ था। ये एक फेमस यूट्यूबर है यूएई का। सो अभी वो बैठा हुआ है और गॉसिप कर रहा है लोगों के साथ, कुछ और यूट्यूबर्स के साथ। सो अभी हम लोग इंटर हुए हैं और वहाँ पर सामने आप लोग देख रहा होगा। सो ये देखिए, ये बैठा हुआ है और आप लोग इनकी बातें भी सुन लें। You realize that you're not alone in anything that you're struggling with. When the last panel was up talking about how hard it is to edit, when Qasim was talking about being a one-person show, I feel that. He's not sitting there talking about, so I came here in business class. Yeah, I saw that. I came here in business class, it was lovely. No, I realize the struggle these guys go through. So when you're authentic, and you're true to who you are, whether that's the good or the bad, community that you never knew existed shows up for you, and you feel that love and support, which is, I don't know how to be any other way. So that's why I'm lucky in that regard. So I think it is an issue globally, and not just for the Arab world, when people are giving this perception of what it means to be on social media, and it's very dangerous because you got kids watching these people and thinking that's the life that I want. Start comparing. Like, if I don't have this life, that means that I'm not living, 100%. And you've got 12-year-olds, little boys and girls trying to do things that I'm thinking, yo, man, like, chill. So for me, sorry? Just be a kid. Just be a kid. So for me, I think being authentic is when you build that true connection with people and you build that community around you that's going to help you through the good times and the bad times. But I feel when you build that negative perception of, this is what my life is like, fancy, when you fall or when you have a hard time, you realize that there's not a lot of people around you to support. Flip-flop between India and Pakistan and go back and forth. On a solo travel, just do it. If you hate it, at least you got the experience, you gain confidence, you learned about yourself, and overall it's one of the best ways to grow as a human being. We don't have much time, but I'll say my biggest tip is listen. Listen to people. Stop talking. Listen. That's probably the biggest piece of advice I can give, because everybody can have a story. So listen. I second that. I think the way that I would say it is, I once traveled to one country. Have you ever suggested going to a country and someone's given an opinion on that country, and then you ask them if you've been there, and they're like, no, I just heard about it? How many, can I get a raise of hands of how many have heard that? Wow. All right, so, yeah, exactly, here too. What I would say as my single piece of advice is, I remember I told people I was traveling to a country. I'm not even going to say what the country is. Again, I don't like to feed into these stereotypes. I'll tell you after the show, because I know audios getting picked up everywhere. So I was traveling to a country, and I remember people were saying, Khalid, be careful in the airport, it's, this and that. It was one of the nicest airports I've ever seen. Like, organized, it was friendly. So for me, what I will say is, don't believe it until you actually go and see it for yourself. Because if that was the case, then everyone would have their opinions, and that would be it. There would never be any connections between us as human beings, as countries, as people. So it's on each and every one of you. It's not just on YouTubers, as creators, and everyone. It's on each and every one of us, as human beings, to tear down these walls that people set up, or entities set up. It's on all of us here to connect with each other, to welcome each other to our home. हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया उनकी बातें, और
फिर उसके बाद हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो आएगा बाहर और हम लोगों से मिलेगा। सो फिर मेरा हस्बैंड इतना खुश हुआ क्योंकि उनका फेवरेट है ये यूट्यूबर्स, और हम लोग उनसे मिले और पिक्चर भी लिए उनके साथ, सेल्फ़ी, और मेरा हस्बैंड बहुत खुश था। सो ये सुपर कार ब्लांडी जो है वो भी आ रही है, वो भी मेरे हस्बैंड की फेवरेट है। सो अभी हम लोग बस जस्ट वॉक कर रहे थे, उधर उधर घूम रहे थे, और आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था और आप लोगों को दिखा रही थी। सो डर गई। विंडो के सामने बर्ड्स आए, मैं समझ रही थी कि क्या आया। खैर, सो बस ये देखिए, ये बहुत सारे लोग नहीं थे, बस थोड़े से लोग थे क्योंकि हम लोग मतलब आई थिंक यू कैन से लंच के टाइम पे आए हुए थे। सो उस टाइम ज़्यादा लोग नहीं थे। सो जब लोग स्टार्ट हुए तो फिर 5 और 6 बज के टाइम ज़्यादा हो गए लोग, और ये फिर से ये टिकटॉकर्स हैं और कुछ यूट्यूबर्स हैं, ये लोग बातें करेंगे, अभी आने वाले हैं। सो वो भी फिर देख लेंगे। और so ये देखिए आ चुके हैं और आप इनकी बातें। We're just winging it. Hello. And then next up we have Aziland. You say wherever you want. Hello guys. And then finally we have Yara. Hello. How are you guys? I'm so excited to be here. So like I said, our moderator could not make it, so we're just gonna kind of wing it. We thought we'd talk about, just have a conversation about, avoiding burnout, what it was like. Introduction. Yara, do you want to tell everyone about what, Yes. your whole story? I'm so excited to be here. This is my first year actually attending VidCon. I started social media about a year and a half ago, and I'm still learning a lot. So I'm really excited to hear what you guys have to say because I have a lot to learn. But honestly, I honestly just stay motivated by like competition. I'm a very competitive person, so whenever I see someone like beating me with views or something, or has a great idea, I'm like, I gotta do something better, I gotta do something great, I'm gonna beat them. So that's just like, I'm a very competitive person in general, so I really like competition. So that's how I stay motivated. How about you guys? Hi guys, I'm Azzy from Azzyland. I've been doing YouTube for about like 6 years. And basically the way I stay motivated is that I just love to see people's faces when I meet them, but also like all the beautiful comments keep me going. So that's kind of like what I do it for. Hello guys, my name is Yusuf, I'm YouTubes. So I started YouTube like in 2016. That's 5 years ago, I think. Before Corona. I don't count anymore. So yeah, I do beauty stuff, makeup videos, some beauty tips and tricks. That's me. I think I'm gonna continue because it's not something I like, and my parents are like extremely Arab parents, like, no, you gotta do this, you gotta be an engineer, you gotta be a doctor. So when I first started social media, they're like, you're gonna fail, no, this sucks, don't do that, like, what are people gonna say about us? So I was gonna say, how do they feel now? Oh Lord. And then I got my first campaign, and then my parents were like, okay, continue, and then they saw like how like it's actually like, it brings in, it's a full-time job. It is, it really is. And so they're like, you know what, if you don't want to continue, that's fine. And I was like, oh really? When you saw the first paycheck, you're like, okay, cool. And then honestly now don't drop out if anyone's studying, keep doing it. Yeah, I saw you there like kind of freaking out. Hey kids, stay in school, but listen to your parents. Sometimes they are right, sometimes. But
just follow your dreams. सो इन लोगों का जब ख़त्म हुआ तो फिर हम लोग बाहर आ गए। मतलब ये एक अलग जगह है, प्लेस है इन बिटकॉन का, प्ले के लिए भी और म्यूज़िक भी लगा हुआ था। और यहाँ पर शॉर्ट्स यूट्यूब का जो ये लोगो लगा हुआ है, यहाँ पर हम लोग चले गए क्योंकि कुछ मालूम करना था कि क्यों ये लगा हुआ है। तो फिर जब अंदर चले गए तो वो लोग कह रहे थे कि फ्री आइसक्रीम खाओ, तो मैं तो इतना खुश हुई क्योंकि मेरा हस्बैंड कह रहा है कि नहीं कुछ भी स्वीट ना खाओ और ये वो। सो बस फिर मौका था, मैंने कहा कि हाँ चाहिए दे दो ऐसा नहीं है कि वो मेरे लिए लेता नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि आप फैमिली में शुगर है तो प्लीज़ स्वीट कम खाया करो। और वो कह रही थी कि बस आप लोग आइसक्रीम ले लो और शॉर्ट्स बनाओ और फिर यूट्यूब पे डालो। सो हम लोगों ने ऐसा ही करना है। बस ये मैं एक वीडियो बना लिया है मैंने। सो ये शॉर्ट्स का जो एरिया था वो है और वो शॉर्ट भी मैंने बनाया हुआ है, वो भी आप लोग भी प्लीज़ फिर ज़रूर देख लीजिएगा। सो बस ये था। और फिर आ गया कुछ और यूट्यूबर्स और सुपर ब्लॉन्डी भी आ गई। सुपर ब्लॉन्डी वो इसका नाम भी बहुत मुश्किल है, मुझे याद ही नहीं हो रहा। अगर गलत कह रही तो आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड बस कुछ और यूट्यूबर्स में आए, इनकी बातें भी थोड़ी सुन लें अगर आप लोग एंजॉय करना चाहते हैं और यूट्यूब के बारे में जानना चाहते हैं। अगर कुछ लोगों को मतलब अभी भी न्यूज़ चैनल खोला हुआ है तो ये बातें ज़रूर सुन लें क्योंकि उनके लिए बहुत अहम है। इसलिए हम लोग भी चले गए थे क्योंकि ताकि उन लोगों की बातें सुन लें कि यूट्यूब का चैनल कैसे ग्रो करना है और क्या कुछ करना चाहिए हम लोगों को, इसलिए हम लोग गए हुए थे वहाँ पर। So I actually just like to be consistent with my own content and not really follow the tiny little trends. I know it's important to do that and I should be doing it more often, but honestly it's more about like just being consistent with what I'm uploading all the time. Yeah, similar. There's always something that you can sort of to try to grow to follow a trend, but I think the long-term strategy is to always do what you are passionate about and something that gets you excited. So for me, that's always been going for local street food spots around the world, and that's what's always worked for me. And I've been able to do that for quite a while now. So you guys distribute your content across all platforms, right? As you said, you cannot. सो उसके बाद फिर हम लोग फिर से बाहर आ गए और ये लोग बैठे हुए थे। ये टिकटॉकर्स हैं, 3 गर्ल्स है और 3 बॉयज़ है। सो ये एक जो आप लोग देख रहे हैं पिंक जीन्स वाली पैंट वाली वो बहुत क्यूट है, इतना मतलब शरारती सी है सो इतनी बातें कर रही थी, वो बहुत लाइक एनर्जेटिक थी, यू कैन से लाइक दैट। और इतने अच्छे सॉन्ग्स गाए इन सब ने भी और वहाँ पे हम लोगों ने एंजॉय किया। और जब हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे तो साथ में वही खालिद आमरी भी आ गया और हमारे साथ बैठ गया और उनके साथ 1-2 और यूट्यूबर्स भी थे। सो उन लोगों ने कहा कि हम लोग बैठ सकते हैं, हम लोगों ने कहा कि क्यों नहीं, वाई नॉट। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो उठ जाते हैं और ताकि इन लोगों को स्पेस मिले। जब हम लोग उठने लगे तो वो लोग कहने लगे कि नहीं बैठो 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 सो ये जो टिकटॉकर्स हैं अभी जो आप लोग को दिख रही है थोड़ा सा फार है, लेकिन फिर भी आप लोग पिक्चर में सही से देख सकते हैं। ये लोग ये सब सिंगर्स हैं और इन लोगों ने गाना भी गाया। रात को 6:30 को शो स्टार्ट हुआ था और मैंने इन लोगों का भी वीडियो बनाया हुआ है। सो मैं वो जो ये लोग सिंग कर रहे हैं, मुझे इनका नाम याद नहीं है, सॉरी, मैं ज़्यादा टिकटॉक यूज़ ही नहीं करती इसलिए मुझे इनका नाम नहीं याद और नाम मैं जानती हूँ उन लोगों को। सो ये इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सॉन्ग्स गाया और बहुत अच्छे सब परफॉर्मेंस दिया हुआ है। सो वो मैं वो वीडियो में शॉर्ट्स में दे रही हूँ इन लोगों का जो सॉन्ग्स है। सो प्लीज़ वो भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय गाइस। Be careful what you do, 'cause the lies become the truth. A Billie Jean is not my love. She's just a girl who claims that I
the wall, but the kid is not mine. So nice. What's your name? I was enjoying this so much, guys. Give me a beat, please. Can we cheer for Saad? Big applause for Saad. Dancing. Big up. What's your name? What's your name? Saad. Saad. Saad Faris. Saad Faris. Shout out, Saad. Shout out to you, We have Saad. someone here that likes this. Oh, we have someone? I don't know what I you think guys Yara left us and started doing her own thing. Yara started doing her own yeah. Guys, I feel like the audience has. I mean, there's talent out here, and Anthony's sister can sing also. I'm sorry to put you on the spot, but yeah, you're next. Give us songs. Give her the mic. Give us songs, guys. Don't be shy. What song should we sing? Come on, let's go. Heart Attack? Never put my life out on the line. Never said yes to the right guy. Never had trouble getting what I want. But when it comes to you, I'm never good enough. When I don't get, I can play it like a Kindle. Won't wash my hair. Then make it bounce like a basketball. But you make me wanna act like a girl. Let's lower the pitch. But you make me wanna act like a girl. Pin my hands in high heels. Yes, you make me so nervous that I just can't hold your hand. You make me glow. But I cover up, won't let it shine. So put up my faces up. Look, when I grow up, I want to be like Saad. We love you, Saad. Yeah, he's a whole mood, man. Look at him.